आज पैंडेमिक के बाद फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। क्या पैंडेमिक के बाद 4 साल बाद ऐसा लगता है कि पैंडेमिक के बाद उनका करियर इफेक्ट हुआ है? अपना मॉडलिंग करियर सक्सेसफुली सेट करने के बाद अपना एक्टिंग करियर भी सक्सेसफुली सेट किया है। जब शुरुआत की एक्टिंग की तो क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वैसे एक फेमस कहावत तो है कि मॉडल्स आर 3/4 एक्टर्स, यानी मॉडल्स जो हैं वो 3/4 एक्टर्स होते हैं। पैंडेमिक ने एक नए स्टाइल के फिल्म मेकिंग को, शूटिंग को जन्म दिया, रिमोट फिल्में। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड जो है वो है एक बार फिर से हाइब्रिड एडिशन। जो हमारा पिछला एपिसोड था वो एक स्पेशल एपिसोड था जिसमें हमने पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल के 2 महीने और 8 एपिसोड पूरे होने को सेलिब्रेट किया था। आप सबका धन्यवाद, अनेक अनेक प्यार और अनेक अनेक आपके व्यूज देने के लिए। आज की हमारी गेस्ट हैं लूसी टोबी। लूसी यूएसए में बेस्ड हैं और एक मॉडल हैं। इन्होंने रैंप मॉडलिंग भी की है और प्रिंट मॉडलिंग भी की है। अब मॉडलिंग में अपना एक सक्सेसफुल करियर सेट करने के बाद ये एक एक्ट्रेस बन रही हैं। जल्दी ही ये हॉलीवुड जाएंगी, वहां पर अपना करियर सेट करेंगी। वेलकम लूसी टू पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल। Hi, Amit. Thank you so much for having me. I'm doing wonderful. लूसी ने अपने उम्दा काम के लिए BNF अवार्ड्स एंड फेस्टिवल से अवार्ड ऑफ मेरिट भी जीता हुआ है। Thank you so much. It really is an honor and a privilege to get to contribute to your organization and to receive recognition for just being part of this artistic community. हमने लूसी से पूछा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की। So I actually started out when I was younger. I began with runway. One of my mother's friends was actually a local designer, and she had won Miss Missouri. Ola Huatma scouted me when I was 12 years old to model for Ola Style on the runway. And since then, I've been doing runway modeling. However, I didn't get into photo shoots until I was around 17, so about 4 years ago. And I really started focusing on my career and taking it seriously professionally. I would say around 2 years ago is when I've gotten serious and gotten to just experience some like wonderful things and work with some real talent since then. लूसी ने विभिन्न प्रकार की मॉडलिंग की हुई है। उन्होंने रैंप मॉडलिंग भी की है और प्रिंट मॉडलिंग भी की है। आखिर उन्हें किस तरह की मॉडलिंग पसंद है? So what I enjoy most is just the variety of people that you get to connect with and meet. It's something different every single time. I would have to say there are pluses and minuses to both runway and photo shoots. Whenever you're on the runway, of course, there's one shot, one and done. There is no retakes. It's very live. It's very authentic. And you're getting to interact with an audience and sort of be there present in the moment. And I really do love that aspect. But I also love photo shoots because you can kind of tailor them to be a bit more creative and to put some time and planning into them and in post-production as well to really create something special. So it's hard to choose between do you like runway or photo shoots more because they both hold a special place in my heart. तो देखा आपने, लूसी ने कैसा बैलेंस जवाब दिया कि उन्हें रैंप मॉडलिंग भी पसंद है और प्रिंट मॉडलिंग भी पसंद है। आज पैंडेमिक के बाद फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इस चेंज का असर काफ़ी लोगों पर देखने को मिला, चाहे वो एक्टर्स हों, मॉडल्स हों, फिल्म मेकर्स हों।
क्या पैंडेमिक के बाद 4 साल बाद लूसी को ऐसा लगता है कि पैंडेमिक के बाद उनका करियर अफेक्ट हुआ है? जानिए खुद लूसी से। Well, more so as a student, I was affected than as a model during COVID-19. Of course, any live events, like any runways, any modeling conventions, they were all closed because of safety concerns and public health issues. Uh, but personally, I was able to work remote sometimes. If you were able to set up a studio shoot like in isolation, you could do that. But myself and many of the creatives that I've talked to just entirely scaled back during that entire thing. I know a few different boutique owners that went from having storefront locations in St. Louis to closing their storefront location and primarily focusing on their online presence. And one of them has opened back up again, and one of them has just decided to stay present online because they're able to be profitable and get the word out that way. But the pandemic definitely did change the way that the entertainment industry operates. तो अभी जो लूसी ने बताया, जो सारे चेंजेस फैशन, फिल्म, मॉडलिंग, मीडिया इंडस्ट्री में आए, इन सब चेंजेस को लूसी ने कैसे अपने करियर में अडैप्ट किया, कैसे अपने करियर को बेटर किया, एनहांस किया? Well, it was an adjustment for everybody. Nobody was expecting the world to shut down over a period of, it felt like overnight. But in this constantly ever changing and adapting field of entertainment, you're always being thrown curveballs and having to adapt fast and find new ways to get your art out there. And I think it really forced a lot of people to get creative with their work and develop a sense of introspection. पैंडेमिक ने एक नए स्टाइल के फिल्म मेकिंग को, शूटिंग को जन्म दिया, रिमोट फिल्मिंग। क्या लूसी ने कभी रिमोट फिल्मिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है? क्या लूसी ने रिमोट फिल्मिंग की शूट्स की हैं? So I have not shot anything remote. However, I am in talks. I can't speak much on it right now, but with collaborating on something that's a little bit bigger. It's nice that it has connected us virtually, being able to connect digitally like this. लूसी ने अपना मॉडलिंग करियर सक्सेसफुली सेट करने के बाद अपना एक्टिंग करियर भी सक्सेसफुली सेट किया है। जब लूसी ने शुरुआत की एक्टिंग की, तो क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वैसे एक फेमस कहावत तो है कि मॉडल्स आर 3/4 एक्टर्स, यानी मॉडल्स जो हैं वो 3/4 एक्टर्स होते हैं। पर फिर भी इस कहावत के बावजूद क्या लूसी ने कुछ परेशानी महसूस की एक्टिंग करने में? So I feel that a lot of talented young men and women that I know in the modeling field, their lives kind of intersect with entertainment and movie making, and being able to kind of take skills from one area and build on them in another is definitely a useful skill. I'm lucky that I've been able to adapt quickly. I was very lucky to get to be in a music video actually that's going to air on MTV India with singer KV. I'll link him when reposting this interview. He's incredibly talented, and myself and a couple of my friends, Nikki Serenity, Violet Dearjaw, Stacy, and Rachel, we all got to be backup dancers for that video, and it was just an incredible experience. तो लूसी का ये वीडियो जल्दी ही आप MTV इंडिया पर देखेंगे। जब आप लूसी का ये वीडियो MTV इंडिया पर देखें, तो ये जरूर याद रखें कि लूसी से आपकी पहली मुलाकात पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल में हुई थी। हमने लूसी से आगे पूछा कि एक्टिंग और मॉडलिंग में उन्हें क्या ज़्यादा इजी लगता है, या एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं।
Well, I think they both have their own challenges. Uh, for me, acting is a bit more dynamic because it forces you to kind of embody like the character that you're channeling and to take yourself and immerse yourself in a different experience. And it is, as you said, like models could be kind of three-quarter actors where you're not quite, you need to be dynamic, you need to be 3D, like in the moment, like present. And I think that it's very helpful to develop that skill of like acting on command. If you have experience in improv, that's absolutely helpful. काफ़ी एक्टर्स जो हैं वो एक्टिंग स्कूल जाते हैं, और काफ़ी एक्टर्स जो हैं वो नेचुरल रहते हैं, वो कोई एक्टिंग स्कूल नहीं जाते हैं बल्कि अपने नेचुरल स्टाइल को ही अपना एक्टिंग स्टाइल बना देते हैं। तो जो लूसी हैं उन्होंने क्या किया? क्या वो किसी फॉर्मल एक्टिंग स्कूल गई या उन्होंने अपने नेचुरल एक्टिंग स्टाइल को ही अपना एक्टिंग स्टाइल बना दिया? So I did take acting and improv throughout high school, and I did take an improv class at St. Louis Community College, Merrimack. And I was lucky enough to get to work with some people that were just involved with creating some really nice community theater projects. And I I'm lucky that a couple of my friends have given me some personal pointers on how to develop myself as an actress. Something that I learned to help channel emotion. Whenever you're trying to express emotion as a character, if you can call to mind a time that you felt that and truly authentically portray it, it's going to come across more authentic and genuine to the viewer of the film than if you were to just like force a smile versus if you think of a time that genuinely brought you joy. लूसी से हमारी बातचीत काफ़ी अच्छी चल रही है, पर दोस्तों समय का तकाजा है। लूसी से हम बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल के अगले एपिसोड में, लूसी टोबी पार्ट 2 में। Capul